Hi friends, my name is Mahajan from EME Technologies. So friend, this is Parbhakar. ये आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि स्क्रू ड्राइवर को एक 3D मॉडलिंग में यानी 3D मॉडलिंग में कैसे बनाना है. आज के ही सेशन में हम ये देखेंगे. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर फ्रॉम केसी कॉलेज. मैं यहाँ स्वयं सर के अंदर में मैं यहाँ ऑटोकैड और सॉलिडवर्क में करता हूँ और सीएनसी करता हूँ. सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं. सो मैं आप लोगों को आज स्क्रू ड्राइवर बनाकर दिखाना चाहता हूँ. आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभाकर फ्रॉम EME टेक्नोलॉजी से मैं कैड कैम करता हूँ. आज आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर बनाकर दिखाऊंगा. मैं फर्स्ट कमांड लेता हूँ लाइन. ठीक है, मैं लाइन लिया. लाइन अर्थ ऑन करता हूँ. 0.75 इंटर, 0.75 इंटर एंड 6.5 इंटर एंड 0.75 इंटर. फिर से मैं 4.5 लेता हूँ. स्किप एंड मैं आर्क लेता हूँ. स्टार्ट इन रेडियस. स्किप मैं इसको ट्रिम करता हूँ. अभी डबल इंटर हो गया. कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट. J कमांड ज्वाइन एंड रिवॉल्व. थ्री डी मॉडलिंग में आता हूँ. मैं रिवॉल्व लेता हूँ. अब select object, enter center point, 360 इंटर. अब मैं इसको फ्रंट में करूँगा. सर्कल कमांड इंटर, 2.5 इंटर, प्रेस पुल, 7. अब मैं रेक्टेंगल लूँगा. .5 इंटर एंड ऑफसेट कमांड यूज. 0.1 इंटर इंटर एंड सर्कल कमांड and 2 point circle, 1 2 enter and move command use. 1 enter, select object, a specific point, 1 enter. फिर मैं लेता हूँ मूव कमांड, इंटर, स्पेसिफिक पॉइंट 2. अब मैं लॉफ्ट कमांड लूँगा. इंटर इंटर. मैं फिर मूव लूँगा. इंटर, स्पेसिफिक पॉइंट इसका, मेरा स्क्रू ड्राइवर बनकर तैयार हो गया.
एंड अब मैं इसको कलर करता हूँ। फिर मुझे ड्राफ्टिंग में जाना पड़ेगा एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मैं वाइट लेता हूँ इसको। ग्रिप लगा देता हूँ। ग्रिप कौन सा कलर है? येलो ली। बैक साइड कलर कर दूँ। मेरा स्क्रू ड्राइवर बनकर तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं किसी भी एंगल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।